Good afternoon, friends. Yes. Dr. Humraj, sir, namaste. सर नमस्कार सर. Namaskar. Yes. So, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हम देखने वाले मिक्स कैंसर. मिक्स कैंसर. सो मिक्स कैंसर्स में बहुत सारे ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, मिक्स कैंसर्स में मिक्स टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं. 1, 2, 3 इस टाइप के अलग अलग सेल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द ट्यूमर, that is mixed cancer, mixed tumor. Yes. So आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है. बहुत सारे कैंसर के टाइप्स आज हम देखने वाले हैं. बिनाइन as well as malignant. Yes. So mixed cancers. A mixed tumor is a tumor that derives from multiple tissues or cells. A biplastic tumor or biphasic tumor. Biplastic and biphasic tumor has 2 tissue types. Mixed types from one category or various category, like carcinosarcoma or teratocarcinoma. These are example of mixed tumor. These mixed tumors mostly involve or include in the 5th layer of ECPD system. So most of the tumors are from glands and ECPD system. So you can see here carcinoma and sarcoma. Yes. So mixed type of cells, tissues are involved in this tumor. First example of mixed cancer is pituitary tumors, pituitary growths or pituitary cancer. So pituitary में फिर उसके parts होते हैं. कौन से सेल में ट्यूमर डेवलप हुआ? Yes. So according to that cells उसका name होगा, pathology होगी. The pituitary is a small pea-sized gland. It is found at the base of your brain, in line with the top of your nose. Your pituitary acts as your body's master gland. Yes, so we all know pituitary gland. It is a master gland. It controls the whole glands. Yes. So the first type of cancer of pituitary is basophilic adenoma. This growth, adenoma, it is benign growth. So psychosis, and the second is eosinophilic adenoma. Psychosis, benign again, and
third type is chromophobe. Yes. So chromophobe adenoma. Chrome नाम के cells इसमें involve होते हैं. So chromophobe adenoma, it is psychosis benign. So all three growths, all three tumors, all three diseases are benign psychotic diseases. Again, we will see one by one what is basophilic adenoma, eosinophilic adenoma, and chromophobe क्या होता है. So basophilic adenoma. Also, it is also called pituitary basophilism. Pituitary basophilism and epithelial neoplasm of the anterior pituitary gland. So it arises or appear in the anterior pituitary gland, in which the neoplastic cells stain positive with basic dyes. Pituitary basophilism, as defined in Cushing writings, yes, is characterized by a rapidly acquired obesity which affects chiefly the face, neck, and trunk. Yes, so you can see here the face of this man. This is because of basophilic adenoma. There are three types of cells in the pituitary: chromophobe, acidophil, and basophil. Yes, so you can see in this figure the tumor that is growing in the pituitary gland. Yes. So this is basophilic adenoma. It is purely psychotic benign. And now second type, that is eosinophilic adenoma. It is again psychotic and benign. So adenoma, eosinophilic, a benign tumor usually found in the anterior lobe of pituitary gland. Again, this tumor is again appear or develop into anterior lobe of the pituitary gland, whose cells stain and acid dyes. Such pituitary tumors may give rise to excessive secretion of growth hormone. जैसे ये ट्यूमर यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है तो सिक्रीशन ऑफ GH hormone बढ़ जाता है. So resulting in gigantism and acromegaly. Yes, you all know what is gigantism and acromegaly. तो ये इसके साइड इफेक्ट है या फिर उसके सिम्टम है जो ये ट्यूमर अपियर होने के बाद ये दिखना पेशेंट में शुरू हो जाते हैं. So this is eosinophilic adenoma, benign. Yes. Then chromophobe adenoma. Chromophobe adenoma, it is again psychotic. Pituitary chromophobe adenomas are the most common source of pituitary related problem. It is most common. So an adenoma is a benign or non-cancerogenic glandular tumor. They rarely secrete any hormone, occasionally growth hormone, and rarely PRL or TSH or SCPH, and their effects are usually due to pressure on the brain. Yes, so their effects are usually due to pressure on the brain because of the tumor and optic chiasm. जैसे ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाता है उसका प्रेशर बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ट्यूमर की वजह से वॉल्यूम उसमें बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्रेन के अदर सेल्स पे उसका प्रेशर आएगा, उसकी वजह से फिर इन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है. सो कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर. क्रोमोफोब सेल्स आर वन ऑफ 3 सेल स्टेन टाइप्स. यस, 3 सेल स्टेन टाइप. तो क्रोमोफोब में 3 टाइप के सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन द एंटीरियर and the intermediate lobe of the pituitary. The other being basophil, acidophil, and one type of chromophobe cell is known as amphophils. So these are 3 cells involved in this growth: basophil, acidophil, and amphophil. So amphophils
are epithelial cell found in the anterior and intermediate lobe of the pituitary. So epithelial cells. So amphophils are related to epithelial cells. And the third type, that is chromophobe adenoma. It is again psychosis, benign. So chromophobe adenoma, you can see here, chromophobe adenoma, see the growth in the picture. किस तरह से ये growth होती है pituitary gland में. You can see in MR report also. Yes, this is a chromophobe adenoma. It is most common. Yes, बहुत से patients में ये देखा गया. Yes. Now, parathyroid. The second gland is parathyroid. Yes, हम thyroid में भी देखेंगे. Now, parathyroid. Parathyroid gland release parathyroid hormone, that is PTH, which controls the calcium level in the bloodstream. Other areas of the body, especially the bones, kidneys, and small intestine, respond to PTH by increasing calcium level in the blood. Yes. So जैसे ये growth इस ग्लैंड में होना शुरू हो जाती है या फिर कहीं पे भी किसी भी ग्लैंड में, जैसे हमने अभी पिट्यूटरी का देखा, तो जैसे ग्रोथ स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली उस ग्लैंड का फंक्शन हैम्पर होगा. एक तो लेस सिक्रेशन होगा या फिर एक्सेस सिक्रेशन होगा. सो हियर वैसा ही होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड में. जैसे ही ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाता है, वहां पे ग्रोथ अपेयर होती है, तो उसका जो सिक्रेशन है, वो जो भी हार्मोनल सिक्रेशन उस ग्लैंड से होता है, वो ब्लड लेवल में बढ़ना शुरू हो जाता है. सो यू कैन सी हियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, किस तरह से ये ग्लैंड होती है छोटी छोटी ऑन द थायराइड. यस, दिस इज थायराइड ग्लैंड एंड दीज आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड. स्मॉल डॉट्स you can see here. Yes. So parathyroid gland gives rise to two types of growths: parathyroid adenoma and parathyroid carcinoma. So parathyroid adenoma, it is benign psychotic, and carcinoma, it is syphilitic malignant. So parathyroid adenoma, we will see first psychosis, benign tumor. A parathyroid adenoma is a non-cancerous benign tumor of parathyroid gland. The parathyroid gland are located in the neck near or attached to the back side of the thyroid gland. A parathyroid adenoma is a part of the spectrum of parathyroid disease that also includes parathyroid hyperplasia. Yes, so parathyroid disease, hyperplasia and parathyroid carcinoma. This tumor can lead to a condition called hyperparathyroidism. This is the common term, hyperparathyroidism, because of parathyroid adenoma. So you can see here the growth in the parathyroid gland. In the first picture, you can see growth, that is parathyroid adenoma. Yes. These are again the growth in the parathyroid gland in the second picture. This is also called as hyperplasia of parathyroid gland. Yes. Now the carcinoma, that is malignant tumor or cancer of parathyroid gland. It is pure syphilitic. Parathyroid cancer is a rare disease in which malignant cancer cells form in the tissues of a parathyroid gland. Parathyroid gland के tissues में ये malignant growth होती है. Having certain inherited disorder can increase the risk of developing parathyroid cancer. Parathyroid carcinoma is an indolent, albeit tenacious tumor with rather low malignant potential. Yes, so see the growth of cancerous tissue in the parathyroid gland. So this is malignant, this is syphilitic. Yes.
Now thyroid gland. So thyroid में C cells होते हैं. So C cells में ये tumors बढ़ना शुरू हो जाते हैं. So parafollicular cells, that is called C cells, scattered throughout the thyroid gland, synthesize, store, and secrete calcitonin, that is thyrocalcitonin. The cells are derived from neural crest. So neural crest cells that fuse with the thyroid gland. So these are the C cells. So C cells are involved in this disease. C cells hyperplasia, that is psychosis benign, and medullary carcinoma of thyroid, it is syphilitic malignant. Medullary carcinoma. So benign carcinoma, that is C cell hyperplasia, and malignant, that is medullary carcinoma. Yes. Now first type, C cell hyperplasia. What is C cell hyperplasia? It is characterized by increased mass of C cells and has been identified as a precursor condition of medullary thyroid carcinoma. It is a precursor condition of thyroid carcinoma. Yes, so you can see here C cells. आप देखो पिक्चर में आपको thyroid follicles दिख रहे हैं, उसके बाजू में small C cells एक दिख रहा है. फिर C cells में किस टाइप से ग्रोथ होती है, फिर उसे कहते हैं C cell hyperplasia, and this is benign. C cell hyperplasia, it is benign, but when it become malignant, that is cancer, then it become out of control. The cell growth increase or multiplication of cells become out of control. This is cancer. Yes. So the second type, medullary carcinoma of thyroid, it is syphilitic malignant. Medullary thyroid cancer is a tumor arising from the parafollicular cells or C cells. Yes. So C cells को ही parafollicular cells भी कहते हैं of the thyroid gland. Medullary thyroid cancer produces calcitonin, and elevated calcitonin level is an essential feature of this tumor. जैसी ट्यूमर ग्रोथ होगी तो वहां का कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, एंड तो कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन बढ़ने के बाद जो भी बॉडी में इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होते हैं, इट इज सेकेंडरी. बट ये हमें, जैसे हम हेरिंग्स लॉ फॉलो करते हैं, तो हेरिंग्स लॉ जब हम देखते हैं तो इन केसेस में पर्टिकुलरली जब ये कैल्सिटोनिन इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद जब कैल्सिटोनिन लेवल कम होते जाएगी, इसका मतलब हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं दैट इज राइट मेडिसिन. एंड ये हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी इस टाइप के कैंसर्स हमारे पास आते हैं तो उनमें कौन से हार्मोन्स की लेवल बढ़ती है या फिर कम होती है, तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये इजी होता है ताकि हम हेरिंग्स लॉ वहां पे फॉलो कर सके या फिर फॉलो हो रहा है कि नहीं देख सके. Yes, so you can see in the picture, this is a medullary carcinoma of thyroid. Yes. Okay. Now the adrenal medulla. Yes. So adrenal medulla में कौन से सेल्स में ग्रोथ होती है, कौन सा पार्ट ऑफ एड्रिनल मेडुला इन्वॉल्व होता है. So adrenal medulla, the inner part of an adrenal gland, controls hormone that initiate the fight or flight response. The main hormone secreted by the adrenal medulla includes epinephrine, that is adrenaline, and norepinephrine, that is noradrenaline. So यहाँ पे
डायरेक्ट दिया गया है कि फ्लाइट और फाइट फिनोमिना और रिस्पॉन्स। तो इस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एड्रिनल मेडुला में जो भी ग्रोथ होती है उसका कॉन्फ्लिक्ट आप इजीली ढूंढ सकते हैं, दैट इज द फ्लाइट और फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो जब भी पेशेंट बहुत बुरी तरह से डर जाता है या फिर फियर फॉर सर्वाइवल होता है, तब एड्रिनल मेडुला अफेक्ट होता है। सो it gives rise to this conflict gives rise to growth in the adrenal medulla gland. So phenochromoscytoma, it is benign growth. Pheochromocytoma, psychosis, benign. And the second type of this disease of adrenal medulla is malignant pheochromocytoma. So first benign is pheochromocytoma, and malignant, that is malignant pheochromocytoma, it is syphilitic malignant. You can see here adrenal medulla and इसका कट सेक्शन यहाँ दिया है, that is adrenal cortex, you can see, and adrenal gland, इसका मेडुला, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, सब पार्ट्स यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। यस, नाउ अब इनमें किस तरह से ग्रोथ होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, देन मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा, इस पार्ट में, इस छोटी सी ग्लैंड में कैसे ट्यूमर बढ़ता है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। First, pheochromocytoma, that is psychosis benign. A pheochromocytoma is a rare, usually non-cancerous benign growth or tumor that develops in an adrenal gland. There are two adrenal glands, one located at the top of each kidney, left and right. Two adrenal glands, that means left and right gland. The adrenal glands are part of body's hormone producing system, that is endocrine. So you can see pheochromocytoma, see the growth at the top of adrenal gland. Yes, this blackish part on this orange part of adrenal gland. Yes, so this is pheochromocytoma. And malignant pheochromocytoma. Malignant pheochromocytoma are rare endocrine tumor, rare, that develop within chromaffin tissues. So adrenal gland contains chromaffin tissues, and that chromaffin tissues affect here gives rise to malignant pheochromocytoma, a hormone secreting tumor that can occur in the adrenal gland. Pheochromocytomas usually develop in the small gland on top of the kidneys. The most commonly affect people between age 20 to 50 years, but can occur at any age. Yes, the possibility in 20 to 50 years. Yes. So this is the pheochromocytoma. It is malignant growth. You can see in the top of adrenal gland. Yes, simple dot like आपको पिक्चर में दिखेगा. So pancreas, ये भी बहुत अच्छी ग्लैंड हमारे बॉडी की है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में होता है, that is insulin secretion. So pancreas is an organ located in the abdomen. It plays an essential role in converting the food we eat into fuel for the body cell. Yes. So converting the food into fuel.
सो एनर्जी देने का काम पेनक्रियास करता है. The pancreas has two main functions, and exocrine and endocrine. So these are two functions of pancreas. Exocrine function that helps in digestion, and endocrine function that regulates blood sugar level by secreting or by secretion of insulin. Yes. So these are two functions of pancreas. और अगर पेनक्रियाज में ही अगर कोई ग्रोथ होती है, कोई डिजीज होता है, कोई ट्यूमर होता है, तो ये दोनों भी फंक्शन हैम्पर होते हैं. यस. सो सी द पेनक्रियाज ग्लैंड. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स और 4 टाइप्स ऑफ कैंसरस डिजीजेस ऑफ पेनक्रियाज. फर्स्ट, आइलेट सेल एडिनोमा. Islet cell adenoma. This is benign psychosis. Insulinoma psychosis benign. Insulinoma का केस मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी तरह से वो कंप्लीट क्योर मैंने आपको विथ हेरिंग्स लॉ आपको दिखाया था. इंसुलिनोमा. यस. Then gastrinoma, yes, psychosis benign, and islet cell carcinoma, it is syphilitic malignant. So these are 4 types of disease of pancreas. 3 are benign and 1 is malignant. Islet cell adenoma, insulinoma, gastrinoma, and islet cell carcinoma. Yes. So first, islet cell adenoma, benign. Pancreatic islet cell tumor are rare types of hormone producing tumors that forms in tissues of the pancreas. The cell of pancreas cluster together in a small group called islets. Throughout the pancreas, when a tumor occurs in one of these clusters, it is called an islet cell tumor. It may be benign or cancerous. Yes, so islet cell tumor. आप देख सकते हैं, see the tumor near to the head of the pancreas, and in the highlight आप देख सकते हैं, this is growth, tumor growth in the islet cell of pancreas. Yes. So it is very rare. So this tumor, islet cell tumor, it arises from the pancreatic endocrine cell. Yes, that is islets of Langerhans cell. Now, insulinoma. Insulinoma, it is psychotic benign. Insulinomas are tumors in the pure pancreas. They make extra insulin more than your body can use. इसमें excess secretion of insulin होता है, जिसकी वजह से body sugar level sudden down हो जाती है. Patient become collapse or goes into coma. Yes, so comatose condition भी इस पेशेंट में आ सकती है. इसीलिए इन पेशेंट को बार बार शुगर इनटेक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है. सो दे मेक एक्स्ट्रा इंसुलिन मोर देन योर बॉडी. So insulinomas can cause hypoglycemia or low blood sugar level. So low blood sugar can cause confusion, sweating, weakness, and a rapid heartbeat. If your blood sugar gets too low, you can pass out and even go into a coma. Yes, so what is insulinoma? आप देख सकते हैं,
स्मॉल सिस्ट भी इसके होते हैं. यस, सो इंसुलिनोमा, see the growth in the tail of the pancreas. Yes. Then gastrinoma, the third type of tumor, psychosis benign. Gastrinomas are neuroendocrine tumor characterized by the secretion of gastrin with resultant excessive gastric acid production, causing severe peptic ulcer, disease, and diarrhea. A combination referred to as the Zollinger's-Ellison syndrome. Zollinger's-Ellison syndrome, ZES syndrome. Yes. So ZES syndrome, see the growth, non-beta islets are involved, non-beta islet cells are involved in gastrinoma. Yes. So stomach and gastric hypersecretions. Yes. This is triad of Jay's syndrome. So अल्सर फॉर्मेशन भी होता है इसमें स्टमक में because of hydrochloric acid excess secretion. Then islet cells carcinoma, it is malignant. Pancreatic neuroendocrine tumor may be benign, non-cancer, or malignant, cancerous. When pancreatic neuroendocrine tumors are malignant, they are called pancreatic endocrine cancer or islet cell carcinoma. Islet cell carcinoma. Pancreatic neuroendocrine tumors are much less common than pancreatic endocrine tumors and have a better prognosis. So you can see here the islet cell carcinoma. See the growth in the pancreas in MRI film. You can see here the growth. This is growth of islet cell carcinoma. It is malignant syphilitic. Yes. In the cut section of pancreas, you can see the growth. Now, stomach and intestine. These are organs having tumors or tumor or carcinosis growth in the intestine and inner part of the stomach. So which part of the stomach involved in this growth? Carcinoid tumors or ulcers. So carcinoid tumors, it is cyst-like, but which part of stomach involved? Mostly the lower part of the stomach is involved in this growth. Pancreatic neuroendocrine tumor, sorry. दूसरी स्लाइड यहाँ आ गई. Okay, no problem. So you can see in the stomach, see the pearl-like, cyst-like growth in the stomach. You can see in the cut section of stomach, see the growth. Yes, so this is carcinoid tumor. It is psychotic, benign, और इस कार्सिनोसिनाइड डिजीज को और कार्सिनोइड सिंड्रोम भी कहते हैं. यस, तो मोस्टली इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स एब्डोमेन के
डाइजेस्टिव सिस्टम के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अफेक्ट होते हैं. यस. देन first type is carcinoid and second type is malignant carcinoid. A slow growing carcinous or cancerous tumor that can grow in several places throughout the body. Yes. किसी का noise? Yes, Dr. Yadav ji. Yes. So malignant carcinoid, it is syphilitic, malignant. A slow growing cancerous tumor that can grow in several places throughout the body. A carcinoid tumor often begins in the stomach, appendix, small intestine, colon, rectum and lungs. तो एक ग्रोथ की वजह से इतने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, affect होते हैं. So symptoms often don't appear until late in the disease and are vague. Yes, you can see the growth here, that is malignant carcinoid. Yes, this is tumor secretes CGA into the blood. This CGA, carcinoid tumor cells. Yes, this is the carcinoma of intestine. It is malignant and syphilitic. Then carotid body. What is carotid body? तो कैरोटिड आर्टरी में ये कहाँ पे होता है, कौन सा पार्ट है कैरोटिड आर्टरी का जिसे कैरोटिड बॉडी कहते हैं? सो द कैरोटिड बॉडी इज अ chemoreceptor located in the adventitia of the bifurcation of the common carotid artery. Yes, तो ये जो कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन आपको दिख रहा है वहीं पे होता है कैरोटिड बॉडी और यहीं पे ग्रोथ स्टार्ट होती है. यस, सो chemoreceptor function. Carotid body monitors the blood's pH, PCO2 and PO2 and thereby modulates cardiovascular and respiratory function primarily through sympathetic tone. Yes. So this is carotid artery. This is bifurcation of carotid artery and you can see here carotid body. Yes. तो कैरोटिड बॉडी में किस टाइप का ग्रोथ होता है और उसे क्या कहते हैं? सो कीमोडेक्टोमा is the growth appear in the carotid body. This कीमोडेक्टोमा, it is psychotic, benign. कीमोडेक्टोमा is a rare tumor of the neuroendocrine tissue of the carotid body. So neuroendocrine tissues are involved in this tumor. In the most of the cases is benign, non-cancerous, but can have a malignant behavior. Yes, so it behaves like a malignant. That means when this tumor grows and when it blocks the carotid artery, then it is syphilitic. Yes, so complete block जब वहां पे होगा then it is syphilitic, because अगर वहां पे block हुआ तो brain को blood supply होगा नहीं. Yes, so this is the कीमोडेक्टोमा. You can see here bluish spot in the bifurcation of the carotid artery. Yes. So chemoreceptors. Chemoreceptors are special nerve cells that detect changes in the chemical composition of the blood and send information to the brain. Chemoreceptor system.
So information to the brain to regulate cardiovascular and respiratory function. There are two major types, which are peripheral and central chemoreceptors. तो chemoreceptor system बॉडी की उसमें भी कैंसरस ग्रोथ होती है. तो टू टाइप्स होते हैं कीमोरिसेप्टर सिस्टम के, एक पेरिफेरल, दूसरा सेंट्रल. यस, सो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं टू टाइप्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. यस, तो कीमोरिसेप्टर्स में कौन सी ग्रोथ होती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट. तो फर्स्ट it is paraganglioma, it is psychotic benign growth. Paraganglioma are rare tumor that form near the carotid artery. Near the carotid artery आप देख सकते हैं paraganglioma. Yes. Some near the carotid artery along nerve pathways in the head and neck and in other part of the body. Some paragangliomas make extra catecholamines or catecholamines called adrenaline and noradrenaline. The release of these extra catecholamines into the body, into the blood, may cause signs and symptoms of the diseases. So this is paraganglions or paraganglioma. Yes, you can see in the figure paraganglioma. This is tumor of paraganglioma near the carotid artery. Then the malignant paraganglioma, it is syphilitic और ये आप देख सकते हैं different pictures में. What is paraganglioma? Malignant paraganglioma, it is metastatic malignant and non-secretory paraganglioma is an extremely rare disease. It is very rare. Paragangliomas are usually non-cancerous, but some paragangliomas can become cancerous and spread, metastasize to other part of the body. They can occur at any age, but there are most often diagnosed in adult between 30 to 50. So you can see in the pregnancy, this is paraganglioma, malignant. Yes. So in pregnancy, pregnant woman में ये paraganglioma appear हुआ. Then in the endobronchial tube में भी paraganglioma. Then in the bile duct में आपको paraganglioma दिख रहा है. Yes, this is the cut section of bile duct. So paraganglioma, it is malignant as well as benign. So chemoreceptors में हमें दो चीजें ध्यान में रखना है, एक benign paraganglioma and एक malignant paraganglioma. Now the pigment producing cells in the skin. Skins में कौन से cells involve होते हैं और कौन से tumors यहाँ पाए जाते हैं. So melanocyte is a highly differentiated cell that produces a pigment melanin inside melanosomes. The cell is dark and dendritic in cell. Melanin production is the basic function of melanocyte. Yes. So the layers of skin आप देख रहे हैं, melanocyte cells आप देख रहे हैं, melanin pigmentation देख रहे हैं. Yes. तो इसके ही tumors होते हैं. सो उन ट्यूमर्स को क्या क्या कहते हैं, कौन से ट्यूमर्स होते हैं. तो फर्स्ट जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग है, एक नेवस. सो दिस इज अ ग्रोथ इन द स्किन. नेवस, इट इज साइकोसिस बिनाइन. हम इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं, ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट है.
कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि पेशेंट्स हमारे सामने होते हैं, हम जब भी घूमते हैं तो किसी ना किसी के चेहरे पे इस टाइप के ग्रोथ्स हमें दिखाई देती है, किसी के आंख में, किसी के फेस पे, किसी के बॉडी पे. सो दिस इज कॉल्ड नेवस. इट इज अ कॉमन कलर्ड ग्रोथ ऑन or in your eyes, sometimes called a freckle of the eye. It is similar to a mole on your skin. A nevus can be in the front of your eyes, around the iris, under the retina, at the back of the eye. Yes. So this growth in the eye, on the back, on the skull, on the face is called nevus, but it is benign growth. Yes. And melanoma, it is syphilitic malignant. So it is malignant, that means cancer of pigment producing cells. Nevus is a common colored growth. सॉरी. तो मेलानोमा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखाई देगा. बिनाइन किस टाइप का होता है, मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट इट इज यस. सो बिनाइन जो होता है थोड़ा सा, आप बिनाइन के जो हम पेशेंट देखते हैं मोस्टली इन द क्राउड्स में, कभी कभी अगर पेशेंट हमारे सामने आ जाता है, या फिर कितने सारे लोग होते हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट ये डिजीज लेके घूमते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, या फिर बहुत से लोग ट्रीटमेंट कर करके थक भी जाते हैं लेकिन उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जब ये मैलिग्नेंट हो जाता है तो इट गिव्स राइज टू पेन, देन द ग्रोथ बिकम्स मतलब अल्सरेटिव like this. So you can see the difference here, benign and malignant. So this is like a ulcerative growth on the skin. Yes. So many types of melanomas are here. Yes. So these are the types of mixed cancers. इसमें से कुछ दो चार बचे हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. यस. सो बहुत मैंने बोला था कि आज का टॉपिक थोड़ा लेंदी है और बहुत टाइप्स के कैंसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के मिक्स टाइप में. डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स है, कुछ बिनाइन कुछ मैलिग्नेंट. बट ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इन चीजों को देखते हैं, पेशेंट इस टाइप के डिजीज लेके आते हैं, तो ओनली कॉन्फ्लिक्ट देखना, कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करना और ट्रीटमेंट करना ऐसा नहीं है. उस डिजीज का कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए, वो एक्चुअल में क्या है, क्या उसका पैथोजेनेसिस है, वो समझना जरूरी है. यस. तो हम इतने डिटेल में तो गए नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें वो टर्म क्या है पता होनी चाहिए. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जानने के पहले मैंने ये कुछ उसके डेफिनेशंस, कुछ मीनिंग्स, कुछ उसके पैथोलॉजी के बारे में मैंने इन लेक्चर्स में बताने की कोशिश किया. यस. सो इस पर से हम इजीली कॉन्फ्लिक्ट ध्यान में रख सकेंगे. ओके. सो आज के इस सेशन पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं फास्ट. यस. यस सचिन, कैसे लग रहा है आपको? यस सर, ठीक है सर, बेटर है. फीवर? ठीक है सर, नॉर्मल है. और टिप ऑफ नोज पे जो है सर ब्लैकिश स्पॉट आ गए सर. अच्छा. हाँ वो सर, पहले क्रॉनिक वहाँ हो पे गए ना? सर रेडिश था. और अब जब फीवर कंट्रोल हुआ तो उसपे ब्लैक हो गया सर, जैसे झाइयाँ. ओके, निकल जाएगा वो. जी सर.
आपके मिसेस का? उनका भी ठीक है सर, बेटर है इनका, ओके, वो मुझसे ज्यादा बेटर है वो। अच्छा, हाँ सर। ठीक है। जी सर। ओके, तो अगर किसी को कुछ पूछना नहीं होगा, बताना नहीं होगा, तो हम यही स्टॉप कर देते। ओके, ओके सर। ओके, चलो, बाय बाय, सी यू, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। यस, थैंक यू सर। यस, थैंक यू।